Hello everyone, welcome to Aashmi classes. So in this series we will be discussing about all MCQs related to environmental engineering. A detailed discussion will be done. So our first chapter is water demand and sources of water. So this is the first chapter. We will be starting a detailed discussion on all the MCQs. So the first question is, which factor has the least effect on per capita water demand in urban areas? Climatic conditions, industrial development, quality of water supplied, geological structure of the region. So the correct answer will be geological structure. Why? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन का तो इफेक्ट ऑफकोर्स रहेगा डिमांड के ऊपर. अगर समर सीजन रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा, विंटर सीजन रहेगा तो डिमांड कम हो जाएगा. जितने इंडस्ट्रीज हो गए वो तो उनका इंडस्ट्रियल डिमांड रहेगा. फिर क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर अच्छा क्वालिटी पानी आएगा तो ज़्यादा यूज़ होगा. लेकिन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का कोई उतना इफेक्ट नहीं है. इफेक्ट होता है बट उतना इफेक्ट नहीं होता है. इफ द एवरेज पर कैपिटा demand of a city is 135 LPCD, what would be the approximate maximum daily demand as per IS 1172? So this is the code IS 1172. So according to maximum daily demand is equal to 1.5 into average per capita demand. So यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1.5 into 135. So answer will be 202.5 LPCD. 202.5 LPCD. So next question is, as per CPHEEO manual, the fire demand for a town with a population of 1 lakh is best estimated by. So ये जितने भी ऑप्शन है सारे फायर डिमांड के फॉर्मूलाज है, लेकिन हमारा आंसर होगा कुचलिंग फार्मूला, क्योंकि लेस देन 2 लाख के लिए सबसे बेस्ट होता है कुचलिंग फार्मूला. और कुचलिंग फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू 3182 root P 1 minus 0.01 root P. P is population. A city has a population of 5 lakh with 150 LPCD average demand. If the peak factor is 3, what should be the design capacity of the water supply scheme? So correct answer हमारा हो जाएगा 225 MLD. कैसे होगा? सो हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज वाटर डिमांड. एवरेज वाटर डिमांड कैसे निकालेंगे? सो हमारा पॉपुलेशन क्या है? 5 lakhs इंटू 150 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6. ओके, सो आंसर आ जाएगा 75 MLD. हम लोग 10 to the power 6 से क्यों डिवाइड किए? सो दैट विल गेट मिलियन लीटर्स डे. सो अभी पीक फैक्टर 3 दिया गया है. सो डिजाइन कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 75 into 3, दैट इज 225. ओके, द डिमांड वेरिएशन फैक्टर रेशियो ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड टू एवरेज आवरली डिमांड इज जनरली टेकन एज 2:3. सो दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. द पर कैपिटा डिमांड डज नॉट इंक्लूड डोमेस्टिक डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, फायर डिमांड, इवापोरेशन और पर्कुलेशन लॉसेज. डज नॉट इंक्लूड. पहले 3 ऑप्शन तो इंक्लूड होंगे. सो क्या इंक्लूड नहीं होता है हमारा? इवेपोरेशन एंड पर्कुलेशन लॉसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ओवर एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड? कौन सा वो रीजन है जो कि वाटर डिमांड का एस्टिमेशन एक्सेस कर देता है? लीकेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अनऑथराइज्ड कनेक्शन, सीजनल वेरिएशन, एक्यूरेट मीटरिंग. सो हमारा ओवर एस्टिमेशन का रीजन हो जाता है लीकेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. If fire demand is estimated using Kuchling's formula, it is proportional to क्या होगा? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन, लॉगरिथम. अभी हम लोग देखे थे कुचलिंग्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन. द आवरली वेरिएशन इन वाटर डिमांड इज बेस्ट अकाउंटेड फॉर बाई पीक आवरली डिमांड. क्यों? ये एक्यूरेट एस्टिमेट करता है मैक्सिमम शॉर्ट टर्म वेरिएशन को. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट वाटर डिमांड फोरकास्टिंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इट इज लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड,
इट कंसिडर क्लाइमेट, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इट एक्सक्लूड्स इंडस्ट्रियल राइज, ये तो होगा नहीं क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज तो हम लोग इंक्लूड करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ लीनियर तो होता नहीं है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट तो रहता नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट कंसिडर्स क्लाइमेटिक, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस वाटर सोर्स? सो सरफेस वाटर सोर्स रिवर तो हमारा है ही है, रिवर तो हमारा सरफेस वाटर सोर्स, रिजर्वर भी है, लेक भी है। सो कॉन्फाइंड एक्वेफर हमारा सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आर कंस्ट्रक्टेड मेनली टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम रिवर बेड्स, विच इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सरफेस वाटर सोर्स कंपेयर्ड टू ग्राउंड वाटर। सो सरफेस वाटर का डिसएडवांटेज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर? इजी टू ट्रीट नहीं, लेसर सीजनल वेरिएशन नहीं, बेटर टेस्ट नहीं, सो हाई बैक्टीरियोलॉजिकल contamination. The CF yield of an aquifer is defined as rate at which water can be withdrawn without depleting supply. Which these are all theoretical questions. इसमें डिस्कस करने के लिए क्यों नहीं? Which aquifer yields water under pressure greater than atmospheric pressure? The correct answer is confined aquifer. Bank storage in river is due to infiltration of river water into adjacent aquifers. The most reliable source of water for a city throughout the year is of course reservoir, क्योंकि हम लोग पर्स्ड एक्वेफर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, हार्वेस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते और कॉन्फाइंड एक्वेफर के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते। रिजर्वर इज आवर सोर्स ऑफ सप्लाई। विच ग्राउंड वाटर प्रॉपर्टी इज हाइएस्ट इन कॉन्फाइंड एक्वेफर? स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रेशर हेड। करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिसिबिलिटी। ए ट्यूबवेल टैपिंग an unconfined aquifer will produce gravity well. In hydrological cycle, the main source of groundwater recharge, of course, precipitation, evaporation तो recharge नहीं करवाएगा, रन अप भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, depends on rainfall. रिवर सीपेज से भी उतना होता नहीं है। A town has a 2 lakh population with water demand 180 LPCD. If 15% is for industrial and 5% for fire demand, domestic demand कितना होगा? सो अभी पॉपुलेशन कितना है? 2 लाख। 2 लाख। डिमांड क्या है? 180 LPCD। ओके, सो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हमारा हो जाएगा 36, अगर हम मिलियन में कन्वर्ट कर देंगे तो 36 MLD। सो इंडस्ट्रियल है 15%, फायर है 5%, सो हो गया कितना? 20%। ओके, सो डोमेस्टिक अभी कितना बच गया? डोमेस्टिक बच गया 80%, अगर 100 से माइनस 80%। सो 0.8 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 27 MLD। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। ओके, for a reservoir the dependable yield is defined as yield available 75% of the time. A well in a confined aquifer has drawdown of 2.5 meter and discharge of 1000 LPM. The specific capacity of the well is, so there is a formula, specific capacity is equal to discharge by drawdown. सो कितना हो जाएगा? 1000 by 2.5, it will be 400. The duty of water is area irrigated per unit discharge. Which demand is most difficult to estimate accurately in municipal supply? डोमेस्टिक तो हो जाएगा 135, इंडस्ट्रियल हो जाएगा, पब्लिक यूज डिमांड भी हो जाएगा। डिफिकल्ट इज फायर डिमांड, इसलिए हम लोग उसमें यूज करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूलाज गिवन बाय वैराइटीज ऑफ साइंटिस्ट। इन ए इन्फिल्ट्रेशन वेल सिस्टम वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर सीपेज।
Which IS code provides guidelines for water demand in India? IS 1172. Which source is least dependable in arid regions? Which one? Arid regions means dry regions. So dry regions means rainwater harvesting tank. As per Kuchling formula, fire demand for a population of 1.5 is approximately, so Kuchling formula 3182 root over how much? Root over what? P. Okay. So what will be the answer? It will be around 10.9 ml per day. Okay. Which groundwater property governs the pumping rate from wells? The correct answer is permeability. Which type of well is most suitable for large water supply? Tube well. The effect of climate on water demand is strongly affected by domestic and public demand. The percentage of variation in water demand due to seasonal change is generally between 20 to 30%. For a city, the ratio of maximum daily demand to average daily demand is called peak factor. Which source provides best bacteriological quality of raw water? The correct answer is groundwater from deep aquifers. Which phenomenon explains the occurrence of artesian wells, hydrostatic pressure in confined aquifers? In water supply engineering, the equalizing storage in a reservoir is meant to balance seasonal demand variation. Infiltration capacity of a soil primarily depends on soil texture and compaction. Which of the following aquifers yields the least amount of water? The correct answer is Perst aquifer. The unit of permeability of an aquifer is meter per second. A city with a population of 10 to the power 6 requires 150 LPCD with a fire demand 2% and of total and losses 15%. Total water required will be, okay, so population is 10 to the power 6 and it requires 150 LPCD. So it is asking with fire demand 2% of the total and losses 15%. So we have to add 2% fire and 15% loss. Okay, so it will be, the formula will be 150 into 15% loss means 1.15. We have to add it into 2% fire demand 1.02. So it will be around 172.5 mld. Okay, the correct answer will be 172.5 mld. Okay, a confined aquifer has transmissibility of 2000 meter square per day and drawdown of 2 meter. For well radius of 2 meter and pumping radius 200 meter, what will be the discharge? So there is a formula, Q is equal to 2 pi T H1 minus H2 divided by ln R2 divided by ln R2 by R1. Okay, so you have the value of transmissibility and you have the value of drawdown, and the radius also we have 0.2 meter and the pumping radius is 200 meter, and so discharge we can put this formula and the answer will be around 1000 meter cube per day. Which factor is not considered in empirical fire demand formula? Water pressure in mains. If a town's maximum daily demand is 120 mld, the approximate storage capacity of clear water reservoir should be half of MDD. So it will be 60 mld. The hydrological cycle maintains a balance between surface water and groundwater, correct. Evaporation and transpiration, correct. Precipitation and infiltration, correct. So the correct answer will be all of the above. Which water demand estimation method is most suitable for newly developing cities? Which one? Per capita approach, trend method, arithmetical increase method,
geometrical increase method. So the correct answer will be per capita approach. The variation in per capita demand is not affected by type of soil. The correct increasing order of turbidity in natural water source is groundwater is less than lake water is less than river water. The net yield of an aquifer considering specific yield and specific retention is given by SY minus SR. Which combination of water demand is usually neglected in design of water supply? Domestic plus fire, no, we cannot neglect. Fire plus industrial, we cannot neglect. Public plus fire, cannot neglect. Fire demand plus losses. So these are the 50 questions that we have discussed now. Next, again in our next video we will be coming with next 50 questions. Thank you so much for being with us. Please like, share and subscribe to our channel Aashmi Classes.